रिपोर्ट स्टार्ट करिया पूर्व फास्ट रिपोर्ट कोन फास्ट जान रिपोर्ट टा हमर कोन पे यूज हो जे इट इज यूज्ड टू develop it is used to develop the SAP objects SAP objects in short in reports actually which used to show the transaction business रो जो transaction होची suppose you are running a organization either a tea stall or a Reliance ठीक है there are many business they are doing used to show the transaction of a business in every quarterly quarterly half yearly yearly means every quarterly half yearly or yearly transaction what is the profit what is the loss through this report we can achieve that means in report we obviously we will write some code it is of two types of programs or reports you can say two types of programs two types of programs we are using in reports one is executable program or another is non-executable executable program means it can be executed independently means you can execute without depending others you can execute independently you can execute okay it cannot be executed independently हम इसको independently execute नहीं कर सकते independent okay it can be executed through transaction code or can be used in execute मतलब executable program can be executed independently or non-executable program cannot be executed independently that can be executed through transaction code or T code ठीक है transaction code means T code ठीक है how that standard T code is there like SE11 these are the standard T code like this we can create a custom T code as well of each object SAP में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका T कोड we can create टेबल का T कोड हम क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट का T कोड भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है और जो जितने भी नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है सबका T कोड ठीक है we can create understood ठीक है और that can be executed through transaction code or can be used the same program
in a ନାନୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି ରହ ତୁ ନନା ନମ୍ବର ଫୋନ କର ହଁ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି understood ठीक है that can be used in a executable program or can be used in executable program ठीक है और reports are two types okay report executable program is okay types of reports if we can develop that can be two types of reports one is classical report ठीक है और second is interactive reports interactive report दोनों में डिफरेंस क्या है क्लासिकल रिपोर्ट मीन्स सिंगल स्क्रीन आउटपुट मतलब जो आउटपुट आएगा एक ही स्क्रीन में आएगा ठीक है और इंटरैक्टिव रिपोर्ट इट कैन बी डिस्प्ले मोर देन वन स्क्रीन मोर देन वन स्क्रीन ठीक है maximum screen 21 not maximum total this total screen 21 you can say screen equal to list total list ठीक है list means your screen ठीक है total list screen 21 fast screen fast list fast list equal to your basic list fast screen or fast this is called list fast screen or fast list equal to your basic list okay after that list means 20 list total 21 fast equal to 1 and remaining 20 okay after that list 20 equal to secondary list don't be confused I will show you in the detail okay understood ठीक है टोटल स्क्रीन 21 है फास्ट स्क्रीन छोड़ के और बाकी कितना बचा 20 बचा तो 21 प्लस 20 को 21 टोटल स्क्रीन को लिस्ट भी बोलते हैं LIST लिस्ट ठीक है बेसिक लिस्ट सेकंड लिस्ट और फास्ट बेसिक स्क्रीन सेकंड स्क्रीन यू कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग ठीक है सो वी विल कंटिन्यू विथ सिंगल स्क्रीन we'll continue with the single screen executable program first is executable program with the classic report we will start then we'll tell you classic report with non-executable program then we'll see interactive report means more than one screen we'll see okay and how to create the report the T code equal to SE38 report T code टेबल का जैसे SE11 में पूरा हो जाता है वो वैसा SE38 में आपका T कोड रिपोर्ट का T कोड है you just do remember ठीक है so let's go SE38 तो ये वाला स्क्रीन आएगा ठीक है सर SC8 T कोड है ना सॉरी SC8 T कोड है SE80 also one of the T code
And for a report SE 38. या और कुछ डाउट है बोलो? नहीं सर। Excuse me, sir. अरे या टेल मी पूछो. Hello, sir. हाँ बोलो. In the interview, they will ask how many types of report. What we will explain, sir? How many types of? Yeah, tell me. Viraz, right? अरे पूछो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो. Go ahead, Viraz. If Yes, anything sir. issue, just call. बोलो. There is two type of reports. You have said that 2 times, you know. One is Yes. interactive or another is non-interactive. No, classical. After that, okay. So what we will explain, sir? Yeah, classical report and interactive report. Okay. So if they will ask, what is classical report? Classical report means you just tell this is a single screen output. Okay. Okay. Or where more than screen will using, that is an interactive report. Sure, sir. Okay. Understood? Yes, sir. सर SC38 एग्जीक्यूट प्रोग्राम भी आ जाएगा ना? Yes, in SE38 only we will create executable program and non-executable program also. ठीक है? ठीक है? Let's start with Z and report 1. I'm giving a name report 1. You can name anything. Okay, that standard program, like a standard naming convention, you have to follow by the company. They will give you the naming standards. What name you should follow. Okay, chalo. Then first click on the I just gave one name Z report 1 and click on create. Here the same display change create. In SE11 also display change create was there, same process. And here that radio button should be source code. Okay, source code by default it will be there. Click on create. Okay, this screen will come. This is your description. If you remember in the table level, you are maintaining the short description. Here the title. Title means report description, report title. Here I am telling classical report example. And suppose if you are going to create a report, material related or sales order related or purchase order related, you can give any name according to that requirement. Here simply I mention classical report example. And press tab button. Here you can see the type. You just drag it here. Okay, in the type drop down section, if you can see the type, this is the type. Click on the drop down button. Here you can see the executable program, include program, module pool, function group, subroutine, interface, class pool, type pool. Okay, many are there. Only the executable program, okay, E. It's called a E. In your system, E will come. E executable program. Okay, the first option if you will select, this is the executable program will create. Apart from this executable program, rest of all the programs are non-executable program. Do remember. Okay? Do remember the first option is executable program, means this is the, if you will select, this report will behave as a executable program.
Apart from this, any other option you will select, either include or module pool or function group or subroutine, anything. These are the non-executable program. Do remember. In real time, when they will ask you, create a report. So report always be executable program only. Report means executable program only. If they will specify, create a module pool, create a include, create a function group, then means you can select that one. If they will tell report only, executable program only, you will select executable program. Okay. And don't do anything apart from that. Click on save. First, give the title. Second is the type, executable program or not, executable program. Then click on save. I'm saving in the local object. You can save your custom package. Okay. If you can see, the screen is like this. Here, if you can see report and report name, by default it will come. Okay. When it will come, simply save and activate once. Every object you need to activate. Every object you need to activate. Do remember, without activate any object in SAP, that will not work. Here you can see the status is active. Okay. Next. One of the syntax is there, write statement. Okay, write. In single code. Welcome to SAP. Suppose I'm writing one code. Welcome to SAP and activate. After each line, it's a good practice to activate. It will take some fraction of seconds, but it will be good practice. Okay. Your line number, automatically it is coming line number 8, 5, 6, 7. Automatically it will come. If you press enter, that line number is automatically increased. Okay, no need to do anything. So let's activate this one. And after the activate button, there is an option direct processing. Means this is called your execute button or F8. From keyboard, if you press F8 or click on this option, the same work. Okay. This is called your execute button. Just click on the execute. If you will see, the output is coming, welcome to SAP. And classical report example in the title also coming. Understood? Okay. Though this is your first output screen. This is your first output screen. It's called a basic list. Means classical report. Because उसके बाद और कुछ स्क्रीन नहीं आ रहा, एक ही स्क्रीन आ रहा, मतलब ये तुम्हारा क्लासिकल रिपोर्ट है. ठीक है. और आई एम राइटिंग राइट मतलब टू डिस्प्ले द लाइन. डू रिमेंबर, वेलकम टू SAP or hello. I'm typing something, any text, and activate. Again, activate. Here, if you can see, welcome to SAP and hello on the same line only it is coming. It is coming on a same line. What you will do, if you will here slash. Slash means let's activate.
What happened? The hello. After slash, whatever the text will be there, automatically it will come down. Welcome. ठीक है? Welcome to SAP and hello. Again go back. And one more thing. Here, suppose colon also you will use, you cannot use, your wish. Okay. Colon. That also work with the same only, nothing else. Go back. Suppose one more thing to remember. Right statement I'm using colon. Okay. Entering name Akash. And one more thing. In every syntax, one minute, don't be confused. 1 minute. Every syntax, this is one of the syntax right statement. Every syntax you have to stop with the full stop, close with a full stop. याद रखो, यहाँ पे देखो full stop दिया है ना, dot. It's called a dot actually. It's not a full stop, it's a dot. Every syntax should be closed or should be stopped with a dot. अभी Oracle Java में कैसा है, सिंगल कॉलन और सेमी कॉलन कुछ भी देके क्लोज करते हैं ना. SAP में लास्ट में आपको डॉट देना है. अगर डॉट नहीं देते हो तो SAP will consider as a same line. अगर मैं सपोज यहाँ पे डॉट नहीं दिया तो SAP will consider 8 and line in a single syntax. It will consider which syntax error will come. ठीक है. So say dot. Okay. And one more. There, right. I'm using colon here. ठीक है. In single quote, Akash. Akash Patnaik. ठीक है. Single quote. Ending, starting and ending, remaining. You have to do. ठीक है. Close करके, open करके, close करना. ठीक है. And here just press comma and enter. Here slash. ठीक है. Rename. ठीक है. Again I'm pressing comma slash. Slash means insert a new line. ठीक है, उसका मतलब विराज Shivram and dot means SAP will consider this will a single syntax. ठीक है. अगर आपका डॉट आ गया मतलब this is your last. You have to write a new syntax or a new line. ठीक है. In this case, don't without using right statement multiple times in a single, just use colon. Suppose I'm removing column. Suppose. ठीक है. Here activate is there and in left side check is there. ठीक है. Simply I'm clicking on check. Check means it will check the syntax. Check the syntax and shortcut key Control F2. ठीक है. I'm checking the if any syntax error is there or not. I'm checking on that. See, that error is coming in red color, comma without preceding colon. मतलब आप जो comma देते हो without semi without colon आप दे दिए. मतलब आप comma, if you are using comma, then colon is mandatory, compulsory you have to do. ठीक है. लाइन नंबर क्या है? लाइन नंबर आल्सो ही इज मेंशन 11. आपका अगर लाइन नंबर 11 देखोगे 11 में हो आपका कॉलम मिसिंग था. ठीक है. SAP क्या करता है, एग्जैक्टली एरर क्या है और कौन सा लाइन पे एरर है
वो दे देता है. Suppose you have 1,000 lines of code. You have an error on 600 line. So it's very difficult to find on which line you have error. It's very difficult. Some of programs are there, 1,000, 2,000, 20,000 codes also there. If something error will come, how will find? It's very difficult. So when you will check that, click on that check. This is called a syntax check. So if everything is remaining same or not, so it will suggest you. It will tell you on which line what is the error. SAP will give you automatic. Comma without preceding colon after right statement. ये यहाँ पे लिखा है कि राइट स्टेटमेंट के बाद आपने कॉमा यूज किया मगर कॉलन नहीं दिए, उसका मतलब वही है. तो आप क्या करोगे, कॉलन दे देना. अभी फिर से चेक करो, देखो that error has gone and in the bottom there is a message no syntax error found in this report. मतलब syntactically कुछ भी error नहीं है. You can go ahead with next. ठीक है, and then activate. Activate is mandatory. Without activating any report, it will not display or it cannot be executed the output. Now here one message is coming, object activated. If you click on that execute button, here whatever we enter the data here, it will display. Clear? Chalo. And next, in SAP star, ठीक है, in SAP star is using to comment. To comment that, comment any, comment the entire line. So entire line means it will not trigger. It will not trigger means agar suppose you are commenting this, in front you just put a star first. ठीक है, if you are putting star, suppose this is also error, that star should be in front. So this line will not trigger. Okay, if you will activate, see hello will not print. Here you can see there is no hello. Hello word is not there because that line will not trigger anything. Okay, and one more thing, do remember that code will flow up to down. Whatever you are writing that code, first will trigger first line, then second line, then third, then fourth. In the top to bottom, it will trigger. Clear? Chalo. If you will comment the entire line, star symbol, and the shortcut is control plus this symbol. If you will press anywhere in the cursor, I'm selecting one line. No, don't select. Just simply place a cursor which line you want to comment and press control and this symbol. So automatically star will come in front. And uncomment, control and other symbol. Okay. Or uncomment the line control plus this symbol. So it will uncomment the line. Okay. And this symbol, double code. This is used
to comment partial line. This is used to comment a partial line. Means क्या है? Suppose if you will write in front this, anything you can write. Partial line it will comment. ठीक है? Partial line means suppose here Akash Patnaik, you just write this code and here you want to, for information purpose, you can comment something. Akash is a developer. For information purpose, something, suppose you are doing something. Later on when you will open that program, for knowing purpose, why I write this code? You will forget, definitely. After few days you will forget. If you will put some partial comment, this is used for someone is telling, so that way I did this code, and for this text related or material something related, this one. So easily you can remember. Understood? This is a partial comment we are using. ठीक है? चलो. Yeah, you are clear, no? Yes, sir. Okay, done. This is the right statement. Right is the keyword for displaying purpose. ठीक है? याद रखो. And this is called a syntax. इसको completely क्या बोलते हैं? Syntax बोलते हैं. ठीक है? This line now I'm commenting all things. ठीक है? I'm commenting all the code. Select all and activate. Execute, nothing will happen. ठीक है? कुछ नहीं होगा because no keyword is using, no syntax is there. ठीक है? Let me tell you one more point. In the table level, in the table SE level, okay. In table, tables can be created in two approaches. One equal to top to bottom. Or second is bottom to top. What is top to bottom and what is bottom to top? मतलब हमने अभी टेबल क्रिएट किया कि नहीं किए? क्या किए? पहले टेबल का नाम डाले, फील्ड डाले, डेटा एलिमेंट के नाम दिए, उसके ऊपर डबल क्लिक किए, उसके बाद जो देना था दिए, उसके बाद उसके अंदर ही डोमेन दे दिए. तो एक साथ क्या हुआ? हम टेबल के अंदर ही डेटा एलिमेंट डोमेन पूरा क्रिएट कर दिए. दिस इज कॉल्ड ए टॉप टू बॉटम अप्रोच. ठीक है? टॉप टू बॉटम. और एक है यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट क्रिएट टेबल. ठीक है? उसके बाद डिफाइन डेटा एलिमेंट inside this only, then क्या किए? Define, not to define, create. Data element inside this only. यहाँ पे भी create domain inside this only. ठीक है? मतलब ऐसा ही हमने किया ना, और क्या एक्स्ट्रा किए? कुछ एक्स्ट्रा किए क्या? ऐसा ही किए ना हम लोग.
आया ना? हाँ सर। ऐसा ही किए, टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर ही डेटा एलिमेंट किए, ये डेटा एलिमेंट इंसर्ट दिस ओनली बाय डबल क्लिक, बाय डबल क्लिकिंग, ठीक है, बाय डबल क्लिक। और यहाँ पे भी क्या किया, सेम ना, बाय डबल क्लिक। ठीक है, बॉटम टू टॉप में क्या है, यू कैन क्रिएट डेटा एलिमेंट, you can create a domain, data element individually and then assign or use in a table to create. Understood? मतलब क्या है, हमने अभी जो किया, टेबल का नाम दे दिया, डेटा एलिमेंट का नाम दे दिया, डोमेन दे दिए, डबल क्लिक करके उस सबको क्रिएट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, हो गया। दिस इज कॉल्ड योर टॉप टू बॉटम अप्रोच। और एक है बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जाना। मतलब पहले क्या करेंगे, हम डोमेन क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो डोमेन को एक डेटा एलिमेंट के अंदर डाल के डेटा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, पूरा हो गया तो डेटा एलिमेंट सब क्या करेंगे, हम टेबल में यूज करके बस एक्टिवेट करेंगे, बस काम खत्म। तो इंडिविजुअली क्रिएट करो, टेबल के अंदर डालो, और फिर टेबल के अंदर करके डबल क्लिक करके क्रिएट करो, यो विश। ठीक है, तो आपको इजी कौन सा लगा, टॉप टू बॉटम लगा कि बॉटम टू टॉप अच्छा लगेगा? इजी कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? Anyone? Top to bottom. Always top to bottom is easy. In the real time also 90% you can use top to bottom. Suppose you already created one data element that you can use in the another table. ठीक है, but individually फिर से create करो, use करो, this is not a good, this that can be done but it's not easy. ठीक है, it will take some confusion at that time, you will forget again. टेबल के नाम अंदर दे दो, डबल क्लिक करो, उसको क्रिएट करो, एक्टिवेट करो, काम खत्म। These are the approaches. Actually, I forgot in the table creation. This is not required actually. For theoretically, you just understand. ठीक है, आपका आया ये, ठीक है। और एक है, today I will show you some standard database table. ठीक है, हमने क्या किए, कस्टम डेटाबेस टेबल क्रिएट किए, कहां पे, थ्रू SE11। जो हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट किए जेड स्टूडेंट और जेड एम्प्लॉय, वो क्या था, हमारा कस्टम, मतलब जी टेबल स्टार्टिंग विद जेड इक्वल टू कस्टम टेबल विच इज डेवलप्ड बाय द डेवलपर। ठीक है, और एक टेबल है स्टैंडर्ड डेटाबेस टेबल, स्टैंडर्ड डेटाबेस टेबल which is provided by SAP। क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड डेटाबेस टेबल प्रोवाइड किया हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को इजी रहेगा, जो कि हमको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, लेट मी टेल यू सम टेबल नेम, देन वी विल गो अहेड विथ कोडिंग पार्ट, समथिंग मटेरियल रिलेटेड। Material related table, एक है मारा और एक है मार्क्स। देखो हजारों टेबल है मगर मुझे सब याद नहीं है। ठीक है, दीज आर द सम हेडर टाइप लेबल जो कि मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, MBEW, ठीक है, इतने रेंज। मारा का टेबल क्या है, मटेरियल
हेडर मास्टर रिकॉर्ड। मार्सी क्या है, प्लांट लेवल का टेबल। MARD क्या है, वो स्टोरेज लोकेशन का रहता है। MAKT क्या है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन का रहता है। MBEW क्या है, मटेरियल वैल्यूएशन का रहता है। अगर आप एक एक टेबल आप SE11 में टाइप करोगे तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आपको काम करते करते याद रह जाएगा। ठीक है, दीज आर सम मटेरियल रिलेटेड टेबल। और एक है सेल्स रिलेटेड टेबल। ठीक है, सेल्स रिलेटेड मतलब आपने कितना ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेल हुआ। ठीक है, VBAK AK तुम्हारा है और एक VBAP। देखो देखे तो हजारों टेबल है, मैं 2 ही टेबल बोल रहा हूँ। ठीक है, VBAK क्या है, सेल्स का हेडर टेबल, और VBAP क्या है, सेल्स का आइटम टेबल। ये दोनों याद रखो, हेडर टेबल एक आइटम टेबल। ठीक है, इतना याद रखो। सेल्स गया, और एक परचेज ऑर्डर का है। परचेज ऑर्डर का क्या है, IKKO, ये परचेज ऑर्डर का हेडर है, और एक है IKPO, ये तुम्हारा परचेज ऑर्डर का एक आइटम है। ठीक, और एक है डिलीवरी लेवल, डिलीवरी ऑर्डर। ठीक, डिलीवरी ऑर्डर का क्या है, IKP और एक LIPS। ठीक, देखो डिलीवरी है, इनवॉइस है। ठीक है, और मैं लास्ट लिखता हूँ, और कुछ नहीं लिखूंगा, बहुत है, सब लिखने तो नहीं होता। ठीक है, इनवॉइस ऑर्डर का VBRK है, VBRP है। ठीक है, ये थोड़ा टेबल्स में ले रहा हूं, याद रखो कितना सारा टेबल। अभी आपको देखना है LIKP क्या है। If you will go to SE11, type LIKP, click on display। ये क्या है तुम्हारा, डिलीवरी हेडर डेटा, SD डॉक्यूमेंट। SD मतलब क्या है, तुम्हारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, सेल्स रिलेटेड तुम्हारा डिलीवरी हेडर डेटा है। तुम्हारा डिलीवरी हेडर डेटा मैंने यहाँ पे लिखा डिलीवरी रिलेटेड। ठीक है, डिलीवरी हेडर, ये क्या है तुम्हारा हेडर। तो यहाँ पे जितने भी फील्ड्स है सब वो डिलीवरी का रिलेटेड फील्ड्स है। ठीक है, याद रखो। हम क्या करेंगे, कुछ टेबल्स हम यूज करेंगे रिपोर्ट्स में। ठीक है, मैं और एक बात बताता हूं, सबका T कोड है, सबका स्टैंडर्ड T कोड मैं लिख देता हूं साइड में। ठीक है, T कोड मटेरियल का क्या है, MM01। ठीक है, MM01 मतलब मटेरियल क्रिएशन, MM02 मटेरियल चेंज। हाँ कौन है, कौन, हाँ 5 मिनट। हाँ ठीक है, डिस्प्ले। ठीक है, अभी सेल्स का देखोगे, उसका T कोड है VA01। ठीक है, इसका क्या है, सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, सेम VA02। सेल्स ऑर्डर चेंज। जनरल याद रखिए, सब T कोड ना तुम लोगों को बहुत कम यूज होते हैं, फंक्शनल वाले को ज्यादा यूज होता है। फंक्शनल वाले यूज
अगर कोई बोलेगा कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट करो तो तुम क्रिएट नहीं करते, फंक्शनल वाले करते हैं। मैं बस जानने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। ये 03 मतलब सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले, ठीक है। और ये परचेज ऑर्डर का भी सेम। ME 21N, ठीक है, सेम। ME 22N और एक है ME 23N, ठीक है। मतलब क्रिएट चेंज डिस्प्ले, याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट VL01N, VL02N, VL03N, ठीक है, सही। इनवॉइस ऑर्डर, इनवॉइस का सुनो। और एक बात, ये टी कोड इतना कंफ्यूज मत हो, ये सब याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ, मगर चाहिए ही नहीं तुम लोगों को ये, ठीक है। इनवॉइस का VF01, VF02, VF03, ठीक है, याद रखो बस। और एक बात याद रखो, एक एक टी कोड पे यार लास्ट में N लगेगा। N मतलब एंजॉय ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो टी कोड में स्टैंडर्ड में which T code has N, which T code has N at end that is enjoy transaction. Enjoy transaction means you can say this is a new transaction, ठीक है। If you will type VL01, that is also come, but that is obsolete. That is updated to a new transaction, means that screen level something coming more. Okay, so always use the enjoy transaction. That means a new transaction. Something will ask you what is N, means you can tell a enjoy transaction or new transaction, but N for exactly enjoy. Don't tell ki no, this is a new transaction. This is new, but you can say this is a enjoy transaction. Okay, do remember this thing. Do remember, when one standard T code is running, suppose I am creating one material, class OMM01, I'm entering here. This will created by functional, always do remember. What is material? Suppose I'm entering, actually this is a real-time server, I cannot create, I will create in your server. Okay. And material, industry sector, something I create and I will say. So one material number will create, and that data मतलब जो मैं डेटा एंटर करके एक मटेरियल क्रिएट करूंगा, तो वो क्या करेगा, अपना रेलेवेंट टेबल्स में जाके स्टोर होता है। मैं अभी एक मटेरियल नंबर 1 क्रिएट करूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा बॉम्बे, तो क्या होगा, इसका जो रेलेवेंट टेबल है यहाँ पे आके वो स्टोर होगा, क्योंकि टेबल में ही डेटा स्टोर होता है, ठीक है। When we are running one T code, that is updating the table. Do remember? When standard T code is running, that records is updating the relevant
टेबल्स। अभी मैं सपोज एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा, सपोज V01 जाऊंगा, एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा, तो जो अपना डेटा है, जो रिकॉर्ड रहेगा, कहाँ पे स्टोर होगा? टी कोड में स्टोर नहीं होता, उसका जो फील्ड है, उसका बैकएंड में जो टेबल है, वो टेबल में जाके स्टोर होता है। तो वो टेबल में से ये 2 टेबल है स्टोर होता है, उसका रेलेवेंट है, और 10-12 टेबल है, वो अपना अपना टेबल जाके स्टोर होगा। ठीक है, दीज आर द मेन मास्टर टेबल्स। ठीक है, उसका मतलब वही है कि आप अगर स्टैंडर्ड टी कोड यूज ट्रिगर करते हो तो अपना रेलेवेंट टेबल में जाके वो रिकॉर्ड स्टोर होता है, और वो टेबल अपडेट भी होता है। क्लियर ना? आज एक छोटा सा मैं सेलेक्ट टू क्वेरी लिख देता हूं। ठीक है, मैं काम करेंगे, आप इतना पढ़ो, कल थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा। ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस विथ इंटरनल टेबल वर्क एरिया। ठीक है, वो दोनों कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इजी है, आपको समझना है, बस आपको बस समझना है और